Students, class 10th, chapter 1st, light physics. So we are studying spherical mirror. Spherical mirror, that is concave and convex mirror. अब इसमें image formation, there are some basic rules to form image. तो ये basic rules क्या है? First, ये concave mirror, convex mirror. A ray going parallel to the principal axis, ये principal axis है. A ray going parallel to the principal axis, after reflection it will pass through focus. और इसको ज्वाइन कर दोगे ए बी कंसीडर कर सकते हो. सो दिस इज नॉर्मल बी सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हियर आल्सो कन्वेक्स मिरर. ए रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to pass through focus after reflection. So क्या देखा? फर्स्ट बेसिक रूल, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. क्या है? 4 रूल्स है. फर्स्ट और 3 मोर यू कैन सी. सेकंड, concave mirror, principal axis, focus, center of curvature. A convex mirror, principal axis, focus and center of curvature. तो इसमें क्या है? A ray passing through the focus, a ray passing through the focus. अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से वन रे पासिंग थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. हियर आल्सो ए रे पासिंग थ्रू फोकस, इंसिडेंट डायरेक्टेड टू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. क्या देखा? सेकंड, ए रे डायरेक्टेड टू फोकस, after reflection it will be parallel to the principal axis. A ray directed to focus, after reflection it will be parallel to the principal axis. Second, third you can see. Concave mirror, convex mirror. प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉलिश कर सकते हो, और ये पॉलिश. कन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ए रे डायरेक्टेड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, a ray directed to center of curvature, after reflection it will return along the same path. क्या होगा? it will return after reflection, it will return along the same path. यहां भी कर सकते हो, a ray directed to center of curvature and it will return along the same path. ये थर्ड रूल. क्या देखा इसमें? a ray directed to center of curvature, after reflection it will retrace along the same path. ये same path पे return. यहाँ पे ray directed to center of curvature, after reflection it will return along the same path. Now last you can see fourth one. Concave mirror, ये कन्वेक्स, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर इसमें कोई रे जो है, रे फॉल्स इंसिडेंट ऑब्लिक्वली एट द पोल, सो इट विल रिटर्न, it will reflect obliquely
ओके, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो आई इज इक्वल टू आर. हियर ऑल्सो यू कैन से रे इंसिडेंट obliquely at the pole and it will reflect in this way. So this is your angle of incidence and angle of reflection. So here I is equal to R. So whenever you will study image formation, whenever you will draw the diagram, image formation, you will keep in mind. First क्या है, a ray coming parallel to the principal axis, it will pass through focus. Second क्या है, a ray passing through the focus after reflection it will parallel to the principal axis. Third क्या है, a ray directed to center of curvature after reflection it will return along the same path. Fourth one you are seeing a ray incident falls obliquely at the pole and after reflection it will reflect obliquely. So here angle of incidence is equal to angle of reflection. These things you will keep in mind whenever you will draw